the second session of the Excel training series. And yesterday, so I'm just going to start with what we did yesterday. So can you just give me a recap? What all did we do yesterday, guys? Can someone tell me that what all did we do yesterday? Can I get some inputs? Okay, we did pivot table. Okay. And okay, what is the shortcut key for formatting cell? What is the shortcut key for cell format? Can you tell me? What is the shortcut key? Control 1. Very good. Okay. What is the shortcut key for table format? Can someone tell me? What is the shortcut key for table format? Okay, very good. What does table do? Can you tell me? What is the use of table? Why should table be used? Why do we use table in Excel? Dynamic data. Very good. How do you give name to the table? How do you give name to the table? How do you give name to the table? Very nice. Table design. What is table name used for? What is the use of table name? We can use the table name in functions. Very good. And what else? Table name can be used anywhere in the file. So that is the most important aspect of table name. Table name can be used anywhere in the file. Okay. So this is what we did in yesterday's session. We did the concept of table. We saw how to give table name and we saw how to use that name in calculations, right? So we have seen all these things when it comes to table. Yeah. Okay. So today's session, we are going to do what is known as pivot. Now, what is the use of pivot? I have already shared some file with you. Have you downloaded the file, guys? Have you downloaded the file which was sent to you? Yeah. Okay. So let's begin with our, yes. So let's begin with our session for today. And we are going to begin with, or we are going to talk about table. So what I do, I'm going to start with sharing my screen. Hold on. Let me just close everything. Okay. Now I'm going to start with sharing my screen. Let me know if you guys can see my screen. Let me just close all the windows. Yeah. Okay. Can you see my screen, guys? Please respond. Yeah, very good. Now today we are going to do something called as pivot table. What is pivot table used for? Can you tell me? Any idea what is pivot table used for? What is the use of pivot? Pivot is basically one tool which is used correct for reporting, analysis, dashboard creation. All these things is where the pivot tool is actually used. So pivot tool can be used for n number of things as far as Excel is concerned. You can use it for dashboarding, you can use it for reporting, you can use it for analysis, you can use it for sorting, you can use it for filtering, you can use it for summarizing. When you want to see breakup of breakup, like data's breakup, you want to see up to the smallest level. For that purpose also you can use pivot table. So there are many uses when it comes to pivot. For what purpose pivot can be used? There are many uses of pivot. So let us see one by one. But first question, pivot is reporting. Means I want to make my report dynamic. Now how do I make my report dynamic? Can you tell me? How do I make my report dynamic? Graph. Okay. Anybody else? How do I make my report dynamic? How do I make using table? Absolutely. Why table is used and what is the use of table? We saw that yesterday. So table basically is used for making your data dynamic. So making your data dynamic is what the use of table. Okay. So now first things first, I'm going to
I'm going to open my file, which I have. That is the pivot data, which I have shared with you. First things first, what is the shortcut for table? Control T. So what I'm going to do, Control T, enter. I'm going to convert my data into table. Now, why did I do this? Because I want to make my data dynamic. So in order now, if I make my data dynamic, that means my report is also going to be dynamic. Okay. So if my data is stable, that means my report is also dynamic. Means as I keep on adding or deleting data from my source data, things created from my data will automatically update. So my pivot table is going to update with the help of this. Okay, so this is something you need to understand. That is the reason I have converted my data into table. Okay, now comes the next part. Now, once I've converted my data into table, I want to insert a pivot. Now, where is this option available? If you go to insert, under insert, you will see pivot table. Now, you will see many more fields over here, but the other fields would be covered into more advanced topics when we go forward. Currently, we are going to talk about how do we create reports with the help of pivot table. Using pivot, how can we create reports? This is something we are going to talk in today's session. Now, so I go to insert and I click on pivot table. Now, if I have to do the same thing via the shortcut, how do I? You have a alt key, Alt alt. Can you see on the left side you have a alt key? Guys, next to the Windows key. The moment I press this alt, all the shortcuts on my screen are activated. Can you see? Hello, can I get some response from the class, please? If you are following or you're not following. Yes? Okay. So, yes. So, the moment I press Alt, you will see it will activate all the shortcuts on the screen. So, to go to insert, the shortcut is N. So, I will press N. To go to pivot, the shortcut is V. So, I will press V. Now, when I press V, I will select from table or range. Table means what we have converted, that is table. Range means normal Excel data. So, I'm going to say from table. Okay. If I would have selected range, it would have automatically selected my entire data. Now it is going to ask you where you want to insert your pivot. New worksheet or existing worksheet. So I want to put it in new worksheet. So I'm going to click on OK. Is this clear till here how I inserted pivot, guys? Guys, is this clear? Yes, very good. Now you will see three important things relating to pivot. First, this is the structure of the pivot. On the right side, you will see the field list, and above you will see two tools. From insert. Okay, Pooja, I will repeat. Say. Okay, so I'm going to delete it. I keep my cursor. Now, when you keep the cursor inside the data. Now, what do we mean by cursor? Cursor means this square. When this cursor is inside the data, Excel understands this is the data I need to work on. Okay, so I keep my cursor inside the data, insert pivot table. I choose table and range. Then I will choose new worksheet and okay. Pooja, did you get it? Yes. Thank you. Okay, thank you so much. Now, three important things relating to pivot. First, you will see this is the structure of pivot. On the right side, you will see pivot table fields. These are the data fields from your source data. And above, you will see through two options, analyze and design. So pivot table, analyze and design. You will see two options. So analyze, design. Okay.
Now, all these three are very important when it comes to pivot, because not all the options will be available. Some of the options you will have to use from analyze. Some of the options you will have to use from design as well. Is this clear? Yes, guys. Okay. Now, let us talk about the reporting part. Now, when we come to the data, we need to understand what kind of reports we need. Different kinds of reports which we need to create when we do pivot. Now, see, there are 4 fields inside pivot. So you will see pivot table, you will see filter field, you will see column field, you will see row field, and you will also see value field. Can you see? We have 4 fields: filter, row, column, and value. Everybody got this? Now let's see what happens when we drop field where. Okay, so where we drop fields, accordingly, your pivot changes. For example, if I take country in filter, it creates a filter. If I take country in column, my report becomes horizontal. If I take it in row, my report becomes vertical. Is this clear? Yeah? Yes, we will go to numeric also. Wait. If I drop country in value, it will count. Now, why it is counting? Because it is a text field. Now, whenever there will be a text field, it is automatically going to count. This is something you need to understand. So, when it is a text field, you are going to count. When it is a number field, you are automatically going to talk about this. Now, let's take country in row. Okay. So, my report becomes vertical. Now, below this country, now we are going to do something called as grouping. Now, what is grouping? When we drop is known below country, if I drop the the product code. Now, product code is a number. Okay. So, below country, I drop product code, and in the value, I'm going to drop the quantity. So, if you search over here, you can drop it here. Do this first, guys. Now, if I right click on this quantity, now if you see, pivot creates 2 types of totals. Over here, what you see is the subtotal. Below, what you see over here is the grand total. So pivot creates 2 types of totals, subtotal and grand total. Now what happens is, sometimes depending on my requirement, I do not want to show this subtotal, or I do not want to show this grand total. So what I do, I go to pivot table design. Under that, you will see the option subtotal. I say do not show, grand total off. Everybody got this? सबको समझा ये सब? ग्रैंड टोटल पिवोट का रिपोर्ट कैसे बनाया? सबको समझा है ये? गाइस कोई अपना वीडियो प्लीज ऑफ कर दीजिए. यहाँ पे वर्षा क्या रिपीट करना है? वर्षा क्या रिपीट करना है? सब टोटल और ग्रैंड टोटल. वर्षा. हाँ. सो आप कर्सर पिवोट के अंदर रखोगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है, पिवोट टेबल डिजाइन. मिला? तो आपको ऑप्शन मिलेगा सब टोटल, डू नॉट शो, ग्रैंड टोटल ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम.
डन. वर्षा, इज दिस क्लियर? वर्षा, नाउ दिस, ये अभी हमारा रिपोर्ट ठीक नहीं लग रहा है, मतलब दिस रिपोर्ट इज नॉट लुकिंग गुड. So how do we give a good look to our report? So pivot table design, डिजाइन में आपको ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट लेआउट, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा शो इन टैब्यूलर फॉर्म. वापस एक बार बताती हूँ, डिजाइन फॉर्म क्या करेगा, व्हाट विल टैब्यूलर फॉर्म डू? Tabular form will keep the grouping as it is, and based on that it will automatically create a layout where both the group fields you will be able to see. Is this clear? यहाँ तक क्लियर है गाइस? सबको समझा है यहाँ तक? यस, ओके. अभी हम आते हैं एक्चुअल रिपोर्टिंग की तरफ. ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि हाउ डू वी add the fields and how do we change the layout. Till now I just told you how do we add the field and how do we change the layout. ठीक है, what is the beauty of pivot? Pivot की सुंदरता क्या है? The beauty of pivot is pivot does not touch your source data. मतलब पिवोट की सुंदरता ये है कि पिवोट आपके जो डेटा है उसको वो हाथ नहीं लगाता. आपका डेटा वैसे का वैसा ही रहता है, और आप यहाँ पे जितने बार चाहिए उतनी बार आप रिपोर्ट बनाते रहते हो. सो हाउ मेनी एवर टाइम्स यू वांट टू क्रिएट अ रिपोर्ट, यू कैन कीप ऑन क्रिएटिंग विद द हेल्प ऑफ पिवोट. ठीक है, और एक चीज, आपको ये फील्ड्स अगर नहीं चाहिए तो आप निकाल के वापस दूसरी फील्ड भी डाल सकते हो. तो मैं यहाँ से अभी प्रोडक्ट कोड को डाल के यहाँ पे छोड़ देती हूँ, तो ये मेरा रिपोर्ट ऐसे बन जाता है. अभी पिवोट क्या होता है? तो पिवोट डेटा को समराइज करता है. तो जब वो समराइज करता है तो उसपे आपको जो भी फंक्शंस लगाने हैं आप वो फंक्शन लगा सकते हो. कैसे? देखो, ये वाली वैल्यू पे अगर मैंने राइट क्लिक किया, इस वाली वैल्यू पे मैंने राइट क्लिक किया, तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा समराइज वैल्यू बाय. मिला? कोई ऑप्शन यहाँ पे चेंज कर सकते हो. सी, इफ यू राइट क्लिक ऑन एनी ऑफ द वैल्यू, you can go to summarize value by, and you can change to any of the function you want from here. Is this clear? ये समझा है सबको? हेलो, सबको समझा है ये? ओके, हाँ. देखो, यहां से जाके मैंने इसको एवरेज किया, तो ये एवरेज हो गया. अभी एवरेज होने के बाद मैं क्या करती हूँ, इसको सिलेक्ट करती हूँ. सिलेक्ट कैसे करना है? जैसे मैंने कल बताया, हाउ डू वी सिलेक्ट? सी, वंस अगेन व्हाट आई डिड, आई एम गोइंग टू रिपीट इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. राइट क्लिक, समराइज बाय एवरेज. मैंने राइट क्लिक किया, समराइज बाय एवरेज पे गई. अभी मुझे उसको राउंड ऑफ करना है. नाउ आई वांट टू राउंड इट ऑफ. सो व्हाट विल आई डू? तो मैं क्या करूंगी? तो मैं पहले डेटा को सिलेक्ट करूंगी. पहले आई विल फर्स्ट सिलेक्ट द डेटा. हाउ विल आई सिलेक्ट द डेटा? What is the shortcut for data selection? We discussed this yesterday. Can someone tell me what is the shortcut for data selection? Control Shift down. Very good. Swapnadeep, very good. Control A, Udit will select the entire data. Udit, Control A पूरे डेटा को सिलेक्ट करेगा. पर्टिकुलर रो या कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की, अप एरो की, जो भी आपको करना है वैसे आप कर सकते हो. सो देखिए, फॉर फॉर्मेट सेल गाइस, फॉर्मेट सेल का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल 1. वेरी गुड. कंट्रोल 1 किया, टैब किया. आई डिड कंट्रोल 1, देन टैब. नाउ एन फॉर नंबर, टैब. नाउ रिमेंबर, टैब से आप हमेशा आगे बढ़ते हो, शिफ्ट टैब से आप पीछे आते हो.
सो टैप किया, अभी मैंने किया 0 और राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। यहां तक क्लियर गाइस, यहां तक क्लियर। तो कंट्रोल 1 टैप नंबर डेसिमल प्लेस इज 0। लाइक दिस ऑल्सो समराइज मोर नम, यस वैसे भी आप कर सकते हो निवेदिता, और ऐसे भी आप कर सकते हो। यू कैन डू इट बोथ मैनर्स, यू कैन डू कंट्रोल 1 एंड यू कैन डू इट, और यू कैन डू इट विथ number format also, it is one and the same thing, okay। now so what is this report? अभी ये report क्या है? country wise average sales, this report is showing country wise average sales, but now बट पर अभी हमको क्या दिखाना है? हमको दिखाना है टॉप 10 कंट्रीज। तो उसके लिए क्या करना है? देखो यहाँ पे आपको फिल्टर दिख रहा है कंट्री के नीचे, सबको फिल्टर दिख रहा है कंट्री के नीचे गाइस, सबको फिल्टर दिख रहा है? हाँ, तो उस फिल्टर पे मैंने क्लिक किया और मैं गई filter, you will see two filters, label and value filter। आप जब कंट्री वाले फिल्टर पे क्लिक करोगे तो आपको दो फिल्टर दिखाई देंगे, लेबल फिल्टर और वैल्यू फिल्टर। अभी दोनों में फर्क क्या है? लेबल फिल्टर ये कंट्री के लिए होगा, वैल्यू फिल्टर ये क्वांटिटी के लिए होगा। तो मैं वैल्यू फिल्टर पे गई और मैंने किया टॉप 10, ओके। समझा? तो ये रिपोर्ट क्या दिखा रहा है? कंट्री वाइज एवरेज सेल्स और उसमें से टॉप 10। So this report is showing country wise average sales and top 10 from that. Is this clear? सबको समझा है ये? गाइस सबको समझा है? Yes? ये समझा है सबको? Everybody has understood this report? Hello? Hello? Yeah. So if this report is done, now we are going to go to the next report. तो अभी हम दूसरे रिपोर्ट पे जाएंगे। तो आइए वापस अपने डेटा पे गाइस, हम और एक पिवोट क्रिएट करेंगे, मतलब हम और एक रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। आइए हमारे डेटा पे, अपने डेटा पे आ जाइए सब लोग। एवरीबडी प्लीज कम बैक टू योर डेटा, एवरीबडी ऑन द डेटा। इंसर्ट पिवोट टेबल, सेम प्रोसीजर, इंसर्ट पिवोट टेबल। अभी आपको सेम चीज करनी है, इंसर्ट पिवोट टेबल आपको करना है, पर इस बार आपको नई शीट पे नहीं डालना है। This time you are not going to insert pivot onto a new sheet. This time you are going to insert pivot onto the existing worksheet only. Okay, so you are going to insert pivot on existing worksheet only. Is this clear? So existing worksheet, click inside the location. So existing worksheet, click inside existing worksheet पे क्लिक किया, लोकेशन के अंदर क्लिक करना है। अभी हमने जहां पे प्रीवियसली हमारा पिवोट डाला है, now where we have put our previous pivot, we are going to click on that sheet and, और हम क्या करने वाले हैं? एक ब्लैंक सेल पे क्लिक करने वाले हैं। अभी एक चीज आपको याद रखनी है कि आप एक सोर्स डेटा में से कितने सारे रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हो, जितने आपको चाहिए उतने।
From one source data, how many reports can you create? As many as you want. पर जब आप रिपोर्ट्स प्लेस डालने वाले हो एक शीट में, तो उसको एक के बाजू में एक डालना है. क्यों? एक के नीचे एक नहीं डालना है. When you're insert one other, not one below the other. तो इससे क्या होगा, अगर ऊपर वाला डेटा अपडेट हो गया तो वो नीचे वाले डेटा पे ओवरलैप नहीं होगा. तो ये चीज आपको समझनी है. शिवांशु, आई विल एक्सप्लेन अगेन. सी, मैं वापस पिवोट पे गई. ठीक है, पिवोट पे जाने के बाद इंसर्ट पिवोट टेबल. आई वेंट बैक टू द सोर्स डेटा, इंसर्ट पिवोट टेबल. यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर? Till here you are clear, Shivanshu? Shivanshu, are you clear till here? Shivanshu? Hello? Hello? Shivanshu, are you clear till here? Yes. Now, अभी हमको existing worksheet select करना है. Now we are going to select existing worksheet. Existing worksheet select करने के बाद, after selecting existing worksheet, click on the sheet where you have inserted the previous pivot. जहां पे आपने प्रीवियस पिवोट डाला है उस शीट पे आपको क्लिक करना है. वेयर यू हैव इंसर्टेड द प्रीवियस पिवोट, देन क्लिक ऑन अ सेल. फिर एक सेल पे क्लिक करना है. क्यों? क्योंकि हम डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा पिवोट यहाँ पे प्लेस होगा. वी आर डिफाइनिंग दैट आवर पिवोट विल बी प्लेस्ड ओवर हियर. इज दिस क्लियर? गाइस, इज दिस क्लियर? सबको ये चीज समझी है? मल्टीपल पिवोट टेबल. हाँ, यस. एक सेकेंड ना गाइस, मैं इसका ओके, यहां तक क्लियर. नाउ अभी मुझे क्या करना है? अभी मुझे नेक्स्ट रिपोर्ट बनाना है. कौन सा रिपोर्ट बनाना है? हमको रिपोर्ट बनाना है. वी वांट टू मेक अ रिपोर्ट मंथली एंड क्वार्टरली सेल्स. हमको रिपोर्ट बनाना है कि हर महीने में और क्वार्टर में कितना सेल हुआ है. ठीक है, अभी हमने कुछ डिस्कशन किया था कल अबाउट डेट. याद है कुछ गाइस? कल हमने डेट्स के बारे में कुछ डिस्कशन किया था, याद है? सचिन, guys, we have discussed something about dates yesterday. What did we discuss? जिसे मैंने आपको बोला था कि एक्सेल एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करता है. जब डेटा स्टोर होता है तो आपके रीजनल सेटिंग के अनुसार स्टोर होना चाहिए. सो वी हैड डिस्कस दिस yesterday that Excel follows a particular format. When the data is stored, it should be as per your regional setting. Correct है? Yes, date can be used for calculations as well. Okay, now हम जैसे नंबर पे ग्रुप कर सकते हैं वैसे हम डेट पे भी ग्रुप कर सकते हैं. मतलब the way we can group on numbers, we can also group on dates. Now dates के ग्रुप क्या होता है? dates के ग्रुप, what are the groups? quarters, b etc. है ना? These are all groups of the dates. Correct? Yes, no? Yes, very good. तो अभी ग्रुपिंग कहाँ पे होता है? नाउ वेयर डज ग्रुपिंग हैपन इन पिवोट? आपको एक चीज अच्छे से समझनी है कि ग्रुपिंग इन पिवोट हैपेंस इन रो एंड कॉलम. रो और कॉलम इन दोनों में ही ग्रुपिंग होता है. सो रो एंड कॉलम, दीज टू आर यूज्ड फॉर
grouping in pivot. Clear? Hello? Yes? Okay. Now, so मैंने अगर डेट्स को कॉलम में डाला तो मेरा रिपोर्ट हॉरिजॉन्टल होता है, बट मैंने डेट्स को रो में डाला तो मेरा रिपोर्ट वर्टिकल होता है. इफ आई पुट माय डेट्स इन रो, माय रिपोर्ट इज वर्टिकल. इफ आई पुट माय डेट्स इन कॉलम, माय रिपोर्ट इज हॉरिजॉन्टल. हम लोग, अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो हम हॉरिजॉन्टल रिपोर्टिंग नहीं करते, हम सबसे ज्यादा वर्टिकल रिपोर्टिंग करते हैं. तो मैं क्या करती हूँ, डेट्स को मैं रो में डालती हूँ. तो जो डेट फील्ड है मेरे डेटा में, इनवॉइस डेट, उसको मैं रो में डाल देती हूँ. ठीक है, तो ये मेरा डेट्स कुछ ऐसे आएगा. सबको दिख गया ये? और क्वांटिटी को मैं वैल्यू में डालती हूँ. तो मैंने क्या किया, डेट को मैंने रो में डाला, क्वांटिटी को dates I have put it in quantity, I have put it in value. Okay. अभी इस डेट पे मैं राइट क्लिक करती हूँ. नाउ ऑन दिस डेट आई विल राइट क्लिक. सो इफ आई राइट क्लिक, यू विल सी दिस ऑप्शन ग्रुप. आप जब डेट पे राइट क्लिक करते हो तो आपको ये ऑप्शन आएगा ग्रुप. मैं इस पे क्लिक करती हूँ. सब लोग कीजिए. मैम माय इनवर्स डेट इज इन 05. दैट्स ओके. दीपांशु, आप सिर्फ उसको ये कीजिए, राइट क्लिक करके ग्रुप पे जाइए. फॉर्मेट से फर्क नहीं पड़ेगा, एज लॉन्ग एज इट इज डेट. फॉर्मेट विल नॉट मेक अ डिफरेंस एज लॉन्ग एज इट इज अ डेट. ओके, सिद्धार्थ, डेट्स को, सिद्धार्थ. ओके, नाउ राइट क्लिक ऑन द डेट. सिद्धार्थ, डेट पे राइट क्लिक कीजिए और ग्रुप पे जाइए. राइट क्लिक ऑन द डेट एंड गो टू. गाइस डन? यस. तो जब आप राइट क्लिक करोगे तो आपको ग्रुप का ऑप्शन आएगा. ग्रुप में आपको ऑप्शन आएगा कि आपको कैसे ग्रुप करना है, डे वाइज, मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज, कैसे. तो मैंने किया मंथ और क्वार्टर. कीजिए. आई टू सिलेक्शन. वर्षा, वी वांट टू ग्रुप एज पर टू, सो वी वांट टू ग्रुप एज पर मंथ्स एज वेल एज. वर्षा, हमको दो तरीके से ग्रुप करना है, मंथ्स और क्वार्टर्स दोनों तरीके से, तो इसीलिए दो सिलेक्ट किया है. डन. रिपोर्ट लेआउट, उसी में आपको और एक ऑप्शन मिलेगा, रिपीट ऑल आइटम लेबल्स. डन. गाइस डन? It's not happening. What is not happening, Nivedita? Right click on the date, group, month and quarters. Okay, क्या नहीं हुआ है निवेदिता? Report layout. Nivedita, you have to go to design, report layout, show in tabular form.
show in tabular form. Done? Got it? And then under that, you have the option repeat all item labels. Okay. Guys, I'm going to show you one more report. And then in our group, tonight or tomorrow morning, I'm going to share one practice assignment for you, which will be your assignment, which you need to complete before the next class. मैं और एक रिपोर्ट करके आपको बताऊंगी. इसके बाद मैं आपको आज रात को हमारे ग्रुप पे एक असाइनमेंट भेजूंगी जो आपको नेक्स्ट क्लास के पहले कंप्लीट करना है. ठीक है गाइस? हेलो. हेलो मैम, व्हाट डू यू डू इफ Q1 रिटर्न ओनली वंस? हाँ, उसके लिए आप ये करना है, डिजाइन रिपोर्ट लेआउट रिपीट ऑल आइटम लेबल्स. डन? हेलो, इज दिस डन गाइस? देखिए, क्लिक करो पीवोट के अंदर, डिजाइन रिपोर्ट लेआउट रिपीट ऑल आइटम लेबल्स. नहीं, no. Pooja, first you need to change design report layout. First you need to make it tabular form. With first, no, yeah, tabular form first. Nivedita, first, no, whose question was that? You first go to design report layout, make it tabular form, and then you repeat all item labels. Is this clear? Do not repeat. Click on the button. Repeat all item labels. Dipanshu, not do not repeat. Repeat all item labels. Sure. Siddharth, I am not the one who is recording. The host, you can ask them to share it. Guys, is this clear? Yes, no? Yes. One more and last report, and then I will send you a homework for you to complete. So remember that your homework needs to be completed before the next class. Okay. So now I go back to the data again. That guys, am I audible to you? I'm just telling you something. There is air and it might rain. It has become dark. So probably our internet connection. Yeah, that's what my internet connection is breaking. Internet is breaking. Breaking due to rains. Okay. Internet is breaking due to rains. So if you are not able to hear me or if you log out, we will be joining in the next class. Okay, is this clear, guys? Yeah, because there's a lot of rain, so the internet might get down. It is showing, it's blinking. So that's the reason I'm informing you beforehand. Okay, okay. So insert pivot table. That will tell you, Swapnadeep, where to submit the homework. Okay. First, you complete the homework. Existing worksheet. Click on the sheet and click blank cell. Remember, आप जब multiple pivots डालोगे, एक के बाजू में एक डालना है. Remember, when you are creating multiple pivot, put them next to each other. This is very important. Okay. Now, I take the sales representative in row.
Sales represent in row, quantity in value. Now, I right click on the quantity summarized by max. Right click, summarize by max. Done. Now, click on the row label, value filter, top 10, top 10. So where you have top, you also have an option of bottom. वापस एक बार repeat करती हूँ. Row label, click. Here, मतलब where you have top, you also have an option of bottom. I'm going to do top 10 and I'm going to do top 15. Yeah. Okay. So this was our session for today. I hope you understood reporting कैसे होता है. This was ये हमारा होप आपको समझा होगा कि रिपोर्टिंग कैसे होता है. इसी में एक बार आपका ये प्रैक्टिस में once you practice this, next session I'm going to tell you how to create dashboard. Is this clear, guys? Okay. Any questions or queries? कुछ सवाल है आज के सेशन के? Ma'am, what is sorted from into max according to quantity? मतलब अच्छा, you will have to do. What was the question? Wait, let me just see the question. Ma'am, what do you if you want row labels sorted min to max according to quantity? No, it will be like this. Like you can have like this. See, here it will be, you can sort either on this or on this. So if I right click over here and I can sort, I can right click over here and I can sort. Okay, so because the reference will automatically get sorted. And at the top, Pooja. Yeah, see, right click over here, sort. Smallest to largest to smallest. You will get 110 at the top. Meeting recording, you will have to ask the admin. I cannot do anything about it. Okay, guys. Yes, she will send you the recording. So thank you very much. And I will see you on Tuesday for the next session where we will be doing dashboard creation using pivot. Okay, and then we will go to different kinds of functions. Thank you, guys. Enjoy your weekends. Bye-bye. Thank you so much, ma'am. Thank you guys for the joining. Thank you, Nivedita.